सो अपनी कार ये खड़ी है और अब हमारे पास ब्रेक पैड्स चेंज करने की बारी आ गई है। तो लेट्स चेक अभी क्या हमारे रोटर्स की हालत है। डिस्क पैड तो अभी ऐसे थोड़ा घिस रहे हैं, इधर भी देखते हैं व्हाट्स द सिचुएशन। सी उसको भी शाइन कराने की ज़रूरत है। ओके लेट्स गो। ओके यहाँ पे हम चेक करेंगे अपनी वार्निंग। वार्निंग लाइट, brake system, continue journey at a moderate speed, brake pads needs to be replaced. So हम चलते हैं अपने brake pads के लिए। So हम पहुंच गए हैं Zeal मोटर्स, हमारे फ्रेंड की शॉप। और ये अपने दोस्त की डिफेंडर भी है, अब अपने बड़ी शानदार गाड़ी है। पिंक डिफेंडर का मॉडल है, दिस वन इज 300D। नाइस। ओके एंड यहाँ पे काफ़ी हाई एंड कार्स, आई थिंक बरेली में काफ़ी अच्छा गराज है। एंड दिस इज ओवर्स ज़ील मोटर्स एंड these are sensors, हाँ। ये वाले बैक हैं शायद, ये फ्रंट होंगे, ये छोटे ही। ये बैक अच्छा, के बड़े हैं, फ्रंट के बड़े हैं। एंड ये सर सेंसर्स ये चारों के ही होंगे। तो ये एक आगे रखता है, एक पीछे। अच्छा अच्छा, ओके गुड। कितनी डील में अभी कोटेशन भेजनी है वहाँ पे यार, ऐसा नहीं है चिड़िया को मेल कर देना। क्या हालत है डिस्क की? कि अभी नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी ये लाइंस बनना स्टार्ट हो गई हैं। क्लीन कट लग गया डिस्कों पे, कट लग गया सर। ये है ब्रेक पैड्स की हालत। इतनी तो कुछ है यहाँ पर, लेकिन हाँ होके आ गए हैं। ओके अभी थोड़ा शाइन कर रहे हैं, पॉलिश होने के बाद थोड़े बेटर हैं। अभी ना उसके बाद ना लाइंस पड़ गई थी। सेट हट जाओ तो इसी को टोल नहीं। ये हमारा सेंसर भी रेडी है लगने के लिए। ये होता है जब हल्के हल्के जो घिसना शुरू होते हैं पैड्स, तो ये जब टच करता है उसके बाद ये सेंस करता है एंड देन हमें डिस्प्ले पे दिखाता है कि पैड्स नीड्स टू बी चेंज्ड। So we have taken out the old sensor and the new sensor has been put already set on the desired place. इसकी पुरानी चाबी नहीं थी दूसरी। Now it's time for a rear brake pads. Let's check. इनकी ज़्यादा बुरी हालत है, ये तो चेंज होनी है। ओके एंड डिस्क को भी पॉलिश की ज़रूरत है। लेट्स डू दैट। लेट्स सी द सिचुएशन ऑफ अ रियर सेंसर। ओके and it's done. Last wheel done.
Okay, now check करते हैं vehicle information after reset of the brakes. So we have this future manual drive, sports vehicle status, engine oil level, measurement, service requirement, any check controls. Okay, no fault, showing no faults. Alright, after brake reset, it's done. And here is no light.